Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel, that is Ideal Other Science. Friends, at the top of this book we are looking here, we are watching, here is written BPSC TRE 4.0 exam is our target, and we are preparing for BPSC TRE 4.0 exam, and we are science background students and science is the major part of that exam. As we know that friends, at the last video we have completed the chapter number 7 of this book, and chapter 7 name was motion, and today we will read the summary of this chapter 8, that's name is force and laws of motion. So without wasting our time, let's go on the chapter 8, force and laws of motion, and try to understand that summary of this chapter. So let's go there. Here is written guys, chapter number 8, force and laws of motion, and here is the given the role of this chapter. First of all, we will read the role of this chapter. After that we will read what you have learned. At the last we got that, and here is written guys, in the previous chapter we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities. For many centuries, the problem of motion and its causes had puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, when given a small heat, does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. This remained the belief developed an entirely different approach to understand motion. And guys, we have read out the role of this chapter, and here is given some figures, and here is written figure number 8.1, and what is the name of this figure? Here is written पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी हम किसी भी चीज़ को पुशिंग करें या पुलिंग करें या हिटिंग करें, या उसको दबाएं या खींचें या फिर उसको हिट करें, तो उसका जो है स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो चेंज होगा, चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. Before read the summary of this chapter guys, I want to show you one things. This is the book of NCERT based science book, textbook for class 9th, and here is given many chapters. How many chapters are given here? Let's see in contents. Here is total given chapter 12, and this is new NCERT book, and I have old NCERT book also, and this book is thick than this book, and we have to look here how many chapters are given in old NCERT books. Here is given, you can look guys, here is given chapter 15. It means here is given only 14 or 13, sorry 12 only, and in this old NCERT book is given 15 chapter, and 3 chapter are missing in new NCERT books. We can see guys, at the name of the chapter 1 is here हमारे आसपास के पदार्थ, matter in our surrounding, and same is here matter in our surrounding, and chapter 2 name is क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं, and here is it is matter around us pure, same is written here also, and third chapter name is परमाणु and अणु, and here is third chapter name is atoms and molecules, same is here, and fourth is structure of the atom, and here is also structure of the atom यानी परमाणु की संरचना, and fifth is जीवन की मौलिक इकाई, and here is also the fundamental units of life, and both are same, but 6 is here given tissues, and here is also given at chapter number 6 is tissue, and chapter number 7 is given here जीवों में विविधता, biodiversity in human beings, and but here is given in chapter number 7 is motion. Here one chapter is missing now, and motion chapter is given here inside of this old NCERT book at chapter number 8, and chapter number 7 is missing here, and that is जीवों में विविधता. This type of total 3 chapters are missing in new NCERT book, and in old NCERT book there are 15 chapters, and in new NCERT book there are 12 chapter. So guys, I had to show you all what is difference between new and old NCERT books. There is the difference which I have shown you. Now we will read the summary of that chapter number 8, that name is force and laws of motion. So let's start to read the summary of this chapter. Go on there. Look guys, here is written what you have learned. It means summary of this chapter. After reading that this chapter, what we have learned, here is written one by one line form, and we will read in English and try to understand in Hindi also. First line is given here, first law of motion. An object continues to be in a state of rest or uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force.
इट मीन्स गाइज फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, यानी गति का प्रथम नियम। वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य नहीं करेगा वो अपनी विरामावस्था में बनी रहेगी। सेकंड लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज रिटन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. And what will be the Hindi of this line, guys? One liner form is given here and Hindi of this line will be वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं, यानी इनर्शिया उसे कहते हैं। किसे कहते हैं जड़त्व? हम इनर्शिया, इन इंग्लिश इनर्शिया एंड हिंदी जड़त्व। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध जो रेजिस्ट करेगा उसी को प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उसका यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? इनर्शिया यानी जड़त्व कहेंगे। थर्ड लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज रिटन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। इट मीन्स गाइज किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, और इसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है, यानी केजी है। एंड नेक्स्ट लाइन गिवन हियर इन इंग्लिश एंड व्हाट इज रिटन हियर? हियर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स गाइज घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो घर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमेशा वस्तु की गति का क्या करेगा? अपोज करेगा, उसको विरोध करेगा। एंड नेक्स्ट लाइन इज गिवन हियर इन इंग्लिश, हियर इज रिटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Here was written first law of motion and here is written second law of motion. The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. And what will be the Hindi meaning? Hindi meaning will be गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में होती है। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर and what you have learned. Here is written the SI unit of force is kg meter per second. This is also known as Newton and represented by the symbol n. उसको n के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। A force of 1 Newton produce an acceleration of 1 meter per second on an object of mass 1 kg. And what will be the Hindi meaning of this line, guys? बल का SI मात्रक जो होता है kg मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बल का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होगा। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है और इसे n से हम व्यक्त करते हैं। 1 न्यूटन का बल किसी 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न जो है वो करता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसके बाद गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ इज रिटन हियर इज द law of motion, third law of motion, and what is written here? To every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. It means guys there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. It means guys वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान गति का जो तृतीय नियम क्या कह रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ये दो डिफरेंट बॉडी पर क्या करती है, यानी प्रत्येक क्रिया की जो होती है विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये डिफरेंट बॉडी पर, दो डिफरेंट बॉडी पर ये कार्य करेगी। एक लाइन हमारा ऊपर छूट गया, वन लाइन इज रेस्ट हियर एंड व्हाट इज रिटन हियर? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। इट मीन्स गाइज वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है एंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, यानी जो वस्तु की वेग की होती है। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। एंड लास्ट लाइन इज गिवन हियर ऑफ दिस चैप्टर समरी, हियर इज रिटन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इट मीन्स गाइस किसी विलग निकाय में कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। रिमेन्स उसमें क्या होता है? रिमेन्स जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। इट मीन्स गाइस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. Finally guys, we have completed the summary of this chapter and we have understood in English and we have understood in Hindi also. Many images are given here inside of this chapter. You can look here. Here is the given the figure of forward force on the bullet and recoil of the gun. About gun is given here and inside of this gun there will work the third law of motion will work here. Finally guys, we have completed the chapter number 8, that is the laws of force and laws of motion. In next video we will read the next chapter and the next chapter name is chapter number 9, that is called gravitation. So finally guys, if you view my video is very helpful for your upcoming examination, BPSC TRE 4.0 is our target. So please like and share the video and subscribe my channel. So thank you so much.